I call it 3. I call it 2. So let us consider dt. Now dt is the small torque produced by small area. Okay. Then this dt is equal to force df multiplied by radius r. So torque produced at this point by this area will be force acting on this, force acting in the direction of shear stress multiplied by this distance r. So this is the torque applied. Now I put the value of force. So I write dt will be equal to tau dA into r. So df की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. So df is equal to tau into dA. Okay. Now I put the value of tau over here. Now what is tau from equation number 1? R upon r into tau max. So I put this value. All right. This is equal to r upon capital R into tau max into dA into r. तो यहाँ पे मैंने स्मॉल tau की वैल्यू पुट कर दी है. ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशंस. मैंने कौन कौन सी इक्वेशन यूज की? पहले यूज की 2 एंड 1. सो पहले मैंने डीएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट की 2 से लेके, राइट. फिर मैंने 1 से tau की वैल्यू पुट की यहाँ पे, राइट. So this is small torque produced by small area. If I need to calculate the total torque, so T is the total torque. Acting on area A. So to calculate T, we integrate dt over whole area of cross section. Okay. So I call it equation number 3. तो 3 को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ओवर होल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई इंटीग्रेट r upon r tau max into dA into r like this. So I get the total torque, which is here I write the constants outside tau max upon r constant integration of r square dA over whole area of cross section. So r 2 बार आया इसलिए ये स्क्वायर हो गया. अगर आप यहाँ पे यहाँ से देखोगे, so this is r and this is r, it become r square and tau max upon r ये ब्रैकेट से ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा. Okay. So this value r square dA over area of cross section A is known as polar moment of inertia. So I write T equal to tau max upon r into IP, right, where IP is equal to integration r square dA over whole area is known as polar moment of inertia. Okay. This is known as polar moment of inertia. तो मैं अब मेरा जो टॉर्शन फार्मूला है उसको मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, दैट इज T अपॉन IP इक्वल टू tau max upon r. Okay. Or I can write tau upon r equal to tau max upon r equal to T upon IP. I call it equation number 4. तो ये 4 नंबर इक्वेशन जो है ये हम इसको बोलेंगे टॉर्शन फार्मूला. लेकिन अभी इसका एक और पार्ट है जो मेरे को ड्राइव करना है. दिस इज अ हाफ पोर्शन
I have derived because tau max upon r ये किसके बराबर है, tau upon r के बराबर है। अगर आप देखोगे जो पहले वाली फर्स्ट जहां से हमने शुरू किया था, यहां से tau max upon r यहां से भी लिख सकते हैं। ओके, सो tau max upon r इज इक्वल टू tau upon r, और यहां पे लिख देता हूं tau max upon r इज इक्वल टू tau upon r। ओके, तो ये मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं। नाउ लेट अस ड्राइव द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव ड्राइव्ड। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, दिस फर्स्ट पार्ट। तो आपने जब एग्जाम में डेरिवेशन आएगी, आपने दोनों पार्ट करने हैं, वहां पे पूरा कंप्लीट फार्मूला आपने ड्राइव करना है। सो आई राइट, सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल लेंथ dx let us consider a small length dx of the shaft तो एक जो बिगर शाफ्ट है जिसकी लेंथ L है, उसमें से हम एक छोटी लेंथ निकाल लेंगे और उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ इट लाइक दिस। Like this. So this length is dx. Length of the shaft is dx. Okay, so this is the center point, right? On this shaft, we mark one line on the outer surface. एक line लगा लेंगे outer surface के ऊपर like this. And let us say this side is fixed. और दूसरी तरफ से torque लग रहा है इस direction में like this. Let's say this point is A and this point is B. Okay, I join the center O with B like this, then this become radius. And when the torque will act in anti-clockwise direction, then point B will move to some other point. Let's say B comes over here. This is B dash. Okay, B dash. So I join A with B dash, the straight line like this. Okay, then this angle formed over here is gamma. So gamma is the maximum shear strain at the outer surface. And if I join this O with B dash, this is again a radius, and the angle formed over here is your angle of twist. So this is, let's say, d phi. Okay. So what is gamma? Gamma is a maximum shear strain at outer surface. As d phi is small angle of twist. Small angle of twist in small length dx. Okay. Now this is the construction part. I write length of arc BB dash. So this length of this arc BB dash, this will be equal to this radius multiplied by this angle, R into d phi. I call it phi. So, but the length of this length of arc BB dash is also equal to gamma into dx. I call it 6. So arc की लेंथ हम इस एंगल से और इस रेडियस से AB is equal to dx and this angle is equal to gamma. Okay, so we can also calculate the length of the same arc by two formulas. So I equate
I write from 5 and 6, we can write r d phi equal to gamma into dx. Or from here I write the value of d phi, that is small angle of twist. D phi is equal to gamma by r into dx. Now I put the value of gamma, so I write d phi is equal to tau x upon g into dx by r. तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि गामा इज मैक्सिमम shear strain. So from Hooke's law we can write gamma is equal to maximum shear stress divided by g. तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. So ये गैमा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है. Now what is tau x from टॉर्शन फार्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया वहां से d phi equal to tau x. Tau x is equal to t upon ip into r into dx upon gr. तो ये gr नीचे आ गया और tau x की वैल्यू में यहाँ से मैं लिख देता हूँ where tau x is equal to t upon ip into r, जो हमने अभी ड्राइव की इक्वेशन वहां से मैंने लिखा. सो r will cancel with this, so r will cancel with this, और I write d phi will be equal to t upon ip into g to dx. I call it 7. So this is small angle of twist in length dx. I write for total angle of twist phi in a length L integrate. Equation number 7. So if you take integral, you get the total angle of twist d phi from 0 to L. This is equal to 0 to L t upon ipg into dx. Now from here, the integration of this phi will be t upon ipg into x0 to L, or phi will be equal to TL upon ipg. I call it 8. So angle of twist, if you want to calculate the angle of twist in the whole length L, you apply this formula, torque into length divided by polar moment of inertia into capital G. Now from here, we write the value of T upon IP. Now T upon IP is equal to phi G upon L. I call it 9. So right, combining equation number 4 and 9, we get tau upon r equal to tau x upon r equal to t upon ip equal to phi g upon L. Okay. So this equation 10, is known as torsion formula.